Welcome back, students. In this video, we are going to discuss about ordering like fractions. So what does the word ordering means? It means arranging a number in a sequence, right? किसी भी sequence में numbers को arrange करना उसको हम ordering कहते हैं. So there are two types of ordering that we can do. It's ascending order and the descending order. In ascending order, we take the smallest number. ठीक है, हम smallest number को किस में सीक्वेंस करते हैं? ग्रेटेस्ट नंबर में. ठीक है, we start from the smallest number and we move till the greatest, whereas in descending order we take the greatest number and then we move till the smallest one. All right, that means descending. अच्छा जी, we are going to solve this example together. Let's read it. Ali, Ahmed and Sarah bought a cake. Ali ate 1/8 of the cake. Alright, so 1/8 portion जो है वो अली ने खाया केक का. Ahmed ate 5/8 of it, और 5/8 जो है that is eaten by the Ahmed, and Sarah ने 2/8 portion eat किया. So this is the portion of Sarah. Alright, अब हमने करना ये है कि हमारे पास ये थ्री नंबर्स हैं, थ्री फ्रैक्शंस हैं जो कि लाइक फ्रैक्शंस हैं बिकॉज दे हैव द सेम डिनोमिनेटर. राइट, इन तीनों फ्रैक्शंस को पहले तो हमने कंपेयर करना है और देखना है कि कौन सा फ्रैक्शन सबसे छोटा है. सो विल लुक एट द न्यूमरेटर ऑफ दीज फ्रैक्शंस, दैट इज 1, 5 एंड 2. अब 1, 5 और 2 में से स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन कौन सी है? दैट इज 1. 1 इज द स्मॉलेस्ट वन, तो हम उस फ्रैक्शन को सबसे पहले यहाँ पर लिख देते हैं. दैट इज 1/8 एंड वी पुट अ कॉमा ओवर हियर. अब हमने कंपेयर करना है 5 और 2 को. विच वन इज द स्मॉलर वन? ऑब्वियसली 2 इज द स्मॉलर वन, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2/8. राइट, एंड देन we have the last fraction, that is 5/8, that is the greatest number in these three fractions, तो हम उसको last में लिख देते हैं, that is 5/8. Starting from the smaller number, moving on to the greatest one. This is how we order the like fraction in ascending order. Let's look at the descending order, and in this case we are going to take the bigger or the largest or the greatest number first, that is 5/8. Then comes the smaller one. Up 2 or 1 में से कौन सा smaller one है? 2 is the smaller one, so we're gonna write it as 2/8, and the last one is 1/8. So this is how you do a fraction of numbers are actually ordered in descending order. Okay, so this is 5/8, 2/8 and 1/8. Let's look at some other examples. Okay, so arrange the following fraction in ascending order. Ascending order, remember क्या होता है? It's actually the smallest number to bigger number. ठीक है, तो we'll gonna look over here. 3/5, 1/5, 2/5, ये तीनों like fractions हैं. इसमें से सबसे पहले smallest one लेंगे, and 1/5 is actually the smallest one. Then comes 2, and then comes the 3 one. ठीक है, 2/5 and then 3/5. So these are the three numbers, three fractions arranged in ascending order. ठीक है, हम next example देखते हैं. 2/7, 4/7 and 3/7. अब इसमें से सबसे smallest one कौन सा है? 2/7. Alright, and then we have 3 number, and then we have 4 number. Right, so this is how we arrange it in ascending order. We have another example, that is 5/9, 2/9 and 1/9. सबसे पहले हम देखेंगे स्मॉलेस्ट नंबर जो कि है 1/9. उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट नंबर जो 1 से बड़ा है, that is 2/9, and then the biggest one, that is 5/9. Alright, now we're going to look at the examples, and we're going to arrange these following fractions in descending order. Let's do it together.
1/8, 5/8 and 3/8। इनमें से सबसे बिगेस्ट फ्रैक्शन है 5/8, राइट। 5 इज द बिगेस्ट नंबर, तो हम इसको 5/8 लिख देंगे। इसके बाद वी हैव 3/8 एंड देन वी हैव 1/8। नेक्स्ट वी हैव 2/5, 4/5 एंड 1/5। ओके, तो इसमें से बिगेस्ट फ्रैक्चर हमारे पास 4/5 है। देन वी हैव 2/5, then we have 1/5, and the next one we have the example that is 7/13, 5/13 and 3/13। तो इसमें से सबसे बड़ा कौन सा है हमारे पास? We have 7/13, so we are gonna write it as 7/13, alright। Then we're gonna write 5/13 and then we're gonna write 3/13. That means all this example was already arranged in descending order. I hope you guys understand how we can you know arrange the fractions in ascending and descending order. I'll be giving you more examples to solve it yourself and practice them. See you guys in the next video.